it's like, I can't even explain the life. You have to watch the movie to understand how bad it is inside a jail, and that's a sad state of affairs. सर मेरा सनवाज जी से सवाल है सर, आपका पहली मूवी थी इनके साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इनके साथ? क्या नाम सर आपका? भास्कर फ्रॉम एनआई। भास्कर ये मेरी पहली फिल्म, पहला इंटरव्यू भी नहीं रही है सर, सो आई जस्ट वांटेड टू नो योर नेम। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस, सो आई नो राज फॉर अबाउट 2 to 3 years ऐसा, बट आई नेवर थॉट हिम एज एन एक्टर। तो आई टोल्ड हिम कि यार ये अगर फिल्म बनेगी तो आपके साथ ही एज एक्टर बनेगी, अदरवाइज नहीं बनाते। एंड ही वाज क्वाइट नॉट श्योर अबाउट कि टिकटॉक तक ठीक था, फिल्मों तक ये चलेगा नहीं, बट ही वर्कड हार्ड, ही टुक एक्टिंग रियली सीरियसली, ही डिड लॉट ऑफ वर्कशॉप, वी डिड लॉट ऑफ वर्कशॉप टुगेदर। एंड आई टेल यू, आपने अगर ट्रेलर देखा है भास्कर तो आपको पता चलेगा, मेरे को तो नहीं लगता ये फर्स्ट टाइम एक्टर जैसा लगता है, बट यू हैव टू टेल मी, डिड यू फील लाइक कि ये फर्स्ट टाइम एक्टर जैसा लगे? नहीं, एग्जैक्टली सेम। व्हेन यू सी द फिल्म यू विल रियलाइज कि ही इज डन फैबुलस जॉब। ऑफ कोर्स उनकी मेथड एक्टिंग उनको काम आई, लेकिन स्टिल कैमरा के सामने एक्ट करना वाज नो जोक, एंड ही डिड वंडरफुल, he did wonderfully well, and I had a great time shooting this film. Yeah. शहनवाज सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जो कि लगभग बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा। फिल्म बहुत अच्छी है, ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, बट कहीं ना कहीं इस सब इंसिडेंट होने के बाद ये जो फिल्म आई है ये कहीं वॉशिंग मशीन का काम तो नहीं कर रही? सर निर्मा का ऐड नहीं है, सो नहीं वॉशिंग मशीन का ऐड है, सो नहीं करिए। इस पे क्या मानना है आपका, मतलब क्या? सो आई टेल यू व्हेन आप जज कीजिए, मैं बताता हूँ मेरा अप्रोच क्या था। सो व्हेन राज केम आउट, एज आई सेड, हम लोग एक दूसरी फिल्म बना रहे थे जहाँ पे प्रोड्यूस करने का इरादा था, बट व्हेन ही केम आउट ही शोड मी द राइटिंग्स दैट ही डिड, ही शोड मी हाउ इट वाज इमीडिएट दैट वी वांट टू मेक अ फिल्म ऑन दिस। बट एट द सेम टाइम यही सवाल हमारे मन में भी था कि जैसे ही हमें बनाएंगे तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट द केस इन द फिल्म, बिकॉज वो केस से लेने देना इस फिल्म का कुछ भी नहीं है, एंड ना ही इनकी मीडिया ट्रायल का लेना देना है, ना ही इनकी पर्सनल लाइफ का लेना देना है। फिल्म स्टार्ट्स व्हेन ही एंटर्स द जेल एंड फिल्म एंड्स व्हेन ही गेट आउट ऑफ द जेल। अब जेल में जो 63 डेज वो कैसे रहे, कैसे किन लोगों के साथ मिले, कैसे बिताया, कैसे खाया, कैसे पिया, ये सब उसके ऊपर फिल्म है। एंड आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड एक्स्ट्रा मसाला टू मेक अ गुड फिल्म। एंड ये आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये निर्मा का ऐड नहीं है। Hi, this is Seema Dhawan over here. Hi. My question is for both of you. How much of fiction is there in the film? Because this is not biopic, then there might be some fictional touch also. Yeah, so it's based on a true story. So when we say it's not a biopic, it's not from the day I was born till the day I died. It's one incident that happened in my life. So it's a true story. It's 100% based on a true story. And to get this tagline based on a true story, you guys have to understand that censor board doesn't give it very easily. You have to back it with a lot of supporting evidence, which we've done. I've got testimonials from people that were inside that have come out and given their testimony. We have human rights letters when human rights entered the jail as well. So it is based on a true story 100%. Nothing is fiction. सर आपसे सवाल है सर, अभी आप इन्होंने कहा कि कोई सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली गई है, तो फिर इसे कैसे डॉक्यूमेंट्री के तौर पे लिया जाए? आपको ट्रेलर देख के डॉक्यूमेंटरी लगा? नहीं लगा, नहीं लगा। हाँ, सेम नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि एक अच्छी फिल्म, मसालेदार फिल्म बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको एम्पलीफाई किया जाए कि अरे बेचारे कितनी, मतलब उनकी बुरी हालत थी या जो भी था। सी जेल में अच्छी हालत तो किसी की भी नहीं है, एंड वहाँ पे लॉ सबके लिए एक बराबर था, चाहे वो राज कुंद्रा हो या कोई भी हो। तो बस ये भी वहीं पे वैसे थे, और ट्रस्ट मी वहाँ पे इनफ कंटेंट था हमारे लिए टू मेक अ गुड फिल्म। एंड व्हेन यू सी द फिल्म यू रियलाइज कि इट इज़ अ कंटेंट ड्रिवन फिल्म, नॉट अ एक्टर ड्रिवन फिल्म और अ टॉपिक ड्रिवन फिल्म, यू नो। तो सर मामला सब जुडिस है, तो क्या कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ी या नहीं? हम केस को लेके कुछ बातें नहीं की हमने फिल्म में, तो it has nothing to do with the case at all. Guilty not guilty is not the story. It's everything in between that's gory. That's what we've shown. Hello everyone, this is Samia. मेरा सवाल राज सर से है। सर आपको एक्टिंग करनी थी या आपने पहले से सोचा हुआ था, या फिर आप इस फिल्म में काम क्यों कर रहे हैं? सेकेंडली, हर तरफ सोशल मीडिया पर ट्रेलर को लेकर के बात चल रही है कि आप एक सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो इसको लेकर के आपका जवाब क्या है? I never thought of being an actor. Like I said, घर में एक स्टार है हमारे. There were no plans to be an actor ever. And I guess when you say never, कुछ ना कुछ लाइफ में हो ही जाता है. But I love Bollywood. I grew up watching Bollywood. और एक छोटी सी कहानी, I'll tell you a small story. जब मैं 18 साल का था, पद्मिनी कोल्हापुरी मैम ने एक लंदन में एक स्कूल ऑफ एक्टिंग खोल रखा था वहाँ पे.
So I went there for 3 months. I did a course with her and I was one of her favorite students. But I never thought uske baad kuch banega. Ek portfolio bhi banaya maine, but I didn't have the means. You know, we were a very middle class family. We were living end to end, just managing life. तो मुझे कभी लगा नहीं था कि ये कहीं जा पाएगा. मैंने as a शौक के लिए कर लिया उस time पे. But then that was it. I got into business. Like I said, 18 साल की उम्र में टैक्सी चला रहा था. 21 साल की उम्र तक एक पश्मीना शॉल का एम्पायर खड़ा कर लिया मैंने. So I was always in business and I was happy doing that. I got into film distribution. लंदन में काफ़ी सारे बड़ी फिल्में मैंने डिस्ट्रीब्यूट की लंदन में. युवा मेरे जीवन साथी उस टाइम पे. So NRIs love Bollywood and I think I was just one of those kids that enjoyed Bollywood. But कभी उस टाइम के बाद एक और बिजनेस में आ गए और फिर शिल्पा से भी शादी हो गई थी उस टाइम पे. कभी सोचा नहीं था. I was always behind the scenes. हम टिकटॉक्स बड़े करते थे कोविड के टाइम पे एंटरटेन करने के लिए हमारे ऑडियंसेस को. बट ये नहीं कभी सोचा लाइफ में एक एक्टर बनूंगा. एंड इट जस्ट हैपेंड बाय डिफॉल्ट आई गेस. एंड थैंक्स टू शाहनवाज एंड कृपा एंड माय प्रोड्यूसर्स एंड एवरीवन. Hello, sir. Sir, this is sir. Hi, sir. My name is Akash. I'm from Filmi Kida. So, sir, my question is to you, Raj, sir. So, sir, you have lived this in reality, and now you are जो 63 days up in between, you are reliving them in the film for the film. So, was it enjoyable? Was it painful? How was the experience while reliving this in front of the camera? And second question, it's a quick question, like we always love your masks, so I would like to know how many masks do you have? So, yeah, firstly on the, was it difficult? It's still difficult. I'm still dealing with all these demons inside me because it was like, when you know you're not guilty and you know you've done no wrong and then you're accused of something, and like I said, the matter is sub judice, so it'll continue, but I know I've done no wrong, and when I'm being accused of something and I'm having to live 63 days in a place that I didn't deserve to be in, that was painful, and that pain still is inside me. The media trial was also as painful as it could be because, like I said, in the legal trial, I'm given a chance to voice what the facts are. But in the media trial, you guys decide already for me, and you tell me that I'm guilty. You make the people believe that this guy is guilty before the courts have pronounced anything. So that pain just continued, and when I went in front of the camera, there were scenes where maybe when I did cry in real life when I spoke to Shilpa the first time, and it was required to cry. Well, it wasn't required to cry. It was just Shahnawaz just said, relive the scene. And I remember doing that scene and just bawling, and I was just crying, and there was silence on the set. Because normally on a crying scene, a lot of actors use glycerin and they use various things. But I just went back to the day when I spoke to her, and it just reminded me of how hurt we both were as a family. So it was painful, and I guess that pain translates, helped me perform better, and helped me give you the performance inside UT69. It's as natural as I could keep it, but it's real pain, and it continues. I have. You have to see. I didn't sit and count, but yeah, I have the mask was a crazy phase. Again, Mask Man is media created. It was like that. Shilpa hai हमारे घर में एक star, वो Mask Man एक star बन गया. It's not me. It's a mask. I have about 60-70 masks, but अभी 5-6 मेरा बेटा ले गया. मैंने थोड़े से चैरिटी को दे दिए और थोड़े जो फ्रेंड्स ने मांगे उनको दे दिए. अभी Mask Man and I have separated. ओके राज सर, हिमांशु दिस साइड. सर इन दिनों हम देख रहे हैं कि सर बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिजनेसमैन जो है अब एक्टिंग की तरफ रुख कर रहे हैं. आपकी परफॉर्मेंस देख के हम कह सकते हैं कि और बहुत वेल परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट. साथ ही एक विकी जैन है जो अंकिता जी के हस्बैंड है, वो बिग बॉस में धमाल मचा रहे हैं. तो सर किस तरह की परफॉर्मेंस को छोड़, मतलब बिजनेस में छोड़ के आने के लिए इंडस्ट्री की तरफ रुख जब करते हैं तो कितना ध्यान देना पड़ता है? क्योंकि एक बिजनेस बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है और एक्टिंग बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है. तो किस तरह की वो तैयारी होती है, और जब बिल्कुल सिनेमा में घुस जाते हैं तो बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस वॉस तो नहीं होता? मतलब लाइक बिजनेस में तो बहुत लॉस हो चुका है. जब मैं अंदर गया था उस टाइम पे 4000 लोगों की रोजी रोटी चलती थी मेरी कंपनी से, और शिल्पा वो कंपनी नहीं हैंडल कर पाई. सो व्हेन आई वेंट इनसाइड शी टुक अ डिसीजन कि मुझे बंद करनी पड़ेगी. आई वाज द सीईओ ऑफ द लिस्टेड कंपनी एंड मेनी अदर कंपनीज. सो शी टुक अ डिसीजन, एंड व्हेन आई केम आउट आई डिडंट गेट बैक इनटू बिजनेस. सो सिंस देन आई हैव जस्ट बीन सॉर्ट ऑफ happily semi-retired, looking after the family, spending more time with the family. So in terms of what I learned from business and acting, what they're having in common is each project is individual. So a business ka project jo startup hota hai, the startup requires time, effort, research, and when you have to act in a role, a project, it requires time, effort and research. So research to dono mein lagta hai, mehnat dono mein lagti hai. So there are some similarities, बस ये है, even in business you have to have a poker face. Sometimes आपको एक deal चाहिए तो आपको एक्ट करना पड़ता है कि और कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, देना तो दे 50 रुपये में, नहीं तो मैं जा रहा हूँ. तो आई गेस एक्टिंग में भी थोड़ी बहुत ही इन्फ्लुएंस मिल गया था बिजनेस को लेके. बट इट्स नॉट हार्डर,
इमोशंस आर मच मोर एंड आपको मतलब घुसना पड़ता है उस कैरेक्टर के अंदर. सो जब उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप राज कुंद्रा का कैरेक्टर करो, आई डिडंट वांट टू यार, बिकॉज अच्छा खासा फेस है, मैं क्यों चेंज करूं उस फेस के लिए, बट कर लिया मैंने. थैंक यू. That's it. We're done. Wow. Thank you so Thank much. you. Thank you everyone. Please watch the film UT69 3rd November. आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की.